हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास हिताची का एसी है और आप उसको खोलना चाहते हैं या आप कहीं शिफ्टिंग करना चाहते हैं और आप किसी गांव एरिया में हैं, वहां टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, तो आप भी इसको खोल सकते हैं। बहुत ही आसानी है, बहुत सिंपल ट्रिक मैं बताऊंगा आपको एसी खोलने के बारे में। और अगर आप नए टेक्नीशियन हैं और आपको सीखना है एसी कैसे खोलते हैं, तो आप इसी मेरे वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल रजा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी गाइस वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको एसी खोलने में कुछ फॉल्ट है, कुछ दिक्कत आती है, आपके एसी में कुछ फॉल्ट है या कुछ एरर आ रहा है, आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है गाइस। आप मुझे उसमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो, आप कमेंट के जरिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको एक जरूरी बात ये बताना चाहता हूँ कि एसी खोलने के लिए आपको 2 स्लाई रेंज, एक स्क्रू ड्राइवर, 4 नंबर और 5 नंबर एलन की और एक चौड़ा टेप, या अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप किसी भी एसी को खोल सकते हैं। सबकी जो ट्रिक रहती है खोलने की वो बिल्कुल सेम रहती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और आपका बिल्कुल टाइम खराब किए बिना आपको दिखाते हैं हिताची एसी कैसे आप खोल सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, हम एसी के पास आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमको करना ये है, एसी को ऑन करना है और हमको आउटडोर के पास जाना है। आउटडोर हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं गाइस, तो 2 पाइप जो दिख रहे हैं, एक है 1/4 और एक हाफ। पतला वाला जो पाइप है 1/4 है, क्वार्टर का पाइप। पहले आपको एलंगी से उसको बंद करना है, क्वार्टर वाले पाइप को, पतले वाले पाइप को, और 1 मिनट के आसपास आपको एसी चलाना है। उसके बाद मोटा वाला पाइप जो है वो सक्शन पाइप है, उसके बाद उस मोटे वाले पाइप को आपको बंद करना है और अपने एसी को ऑफ करना है, डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद आप अपने गैस जो है आपकी लॉक हो जाएगी और आप अपने एसी को खोल सकते हैं। उसके बाद मैनुअली है, जो भी है खोलना कैसे खुलेगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। तो अभी मैं 1/4 वाला जो पाइप है उसको लॉक कर रहा हूँ और उसके बाद 1 मिनट से थोड़ा कम, 50 सेकंड के आसपास आपको एसी चलाना है। पूरी गैस आपकी रिकवर हो जाएगी कंप्रेसर में। उसके बाद मोटे वाले पाइप को बंद करना है और अपने एसी को डिस्कनेक्ट करना है गाइस। तो चलिए गाइस, आगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसा खोलना है। मैं आपको लॉक करने की विधि आपको बता दिया है, इसमें ट्रिक बता दिया है, और आगे जो है आप देख के कंफर्म कर सकते हैं एसी कैसा खुलता है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fuel